Hello, welcome to the platform of Chronicle IAS. My name is Prakash Upadhyay. I am the faculty of Geography, Environment and Ecology and Disaster Management at Chronicle IAS. Now we are just continuing our series of UPSC paper discussion. Look at the question. Technology driven forest conservation in India is vital for climate resilience and sustainability. Discuss the role of modern technology in the sustainable forest management. देखो भाई, firstly we are just going to identify what is the correct demand of the question. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि भारत में प्रौद्योगिकी आधारित वन संरक्षण जलवायु लचीलेपन और सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत में सतत वन प्रबंधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए. ये क्या कह रहा है भाई? फर्स्टली वी आर जस्ट गोइंग टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्टली टेल अस what is the role of technology. What is the role of technology? What is the role of technology in context of forest, sustainable forest management? ठीक, पहले तो ये कह रहा है और इसमें दो और की टर्म है. लुक एट द क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन और क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया इज वाइटल फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस. तो कह रहा है व्हाई द टेक्नोलॉजी ड्रिवन फैक्टर्स आर वाइटल फॉर climate resilience and sustainability. Here there is a two words, one is a climate resilience and second one is a sustainability. And again this is the discuss the another tail word. What does it means by tail word? Give us the understanding about the nature of the question, behavior of the question, and what kind of method you can continue with approaching the question. Okay, discuss the role of modern technology. Discuss the role of modern technology in the sustainable forest management. Again वही word है and you have to also remember the word limit. मतलब ये क्या कह रहा है? Discuss the role of modern technology. तो first part में technology driven forest conservation in India is vital for climate resilience and sustainability. ये बताना है कि why the technology driven forest management is climate resilience as well as the sustainable for the forest management. So just we are going to approach this question. Firstly, I want to tell you what does it means by climate, what does it means by climate resilience. What does it means by climate resilience? क्या मतलब होता है climate resilience का? तो climate resilience, it is the ability of system, community or individual to anticipate, prepare, response, or you can say that recover from the adverse impact of climate change. तो क्या कह रहा है? It is a kind of ability which develops against the climate change. Against the climate change develop हो रहा है. It is a kind of ability and it is the kind of response system. It is a kind of recovery system which develops against the impact of climate change. I hope that will clear. And the second one is sustainability. The second word is sustainability. 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 What does this means by sustainability? Sustainability is something which says that कि भाई it is a kind of mechanism which suggests that how you can use any resource in an optimized way without degrading its potential for the upcoming generation. It is a kind of sustainability. Now we are just moving to the what is the role and how the AI, how the technology driven forest management, sustainable forest management is playing vital role in the for the climate resilience okay, let me correct the word.
resilience and sustainability. तो how we can approach? तो हमने क्या किया भाई इस क्वेश्चन में? फर्स्टली we just break the question for the correct or the understanding the exact or the right approach or the right behavior of the question. Now we are just going to write down the intro of this question. Intro इसका करने जा रहे हैं. Now we are going to write down intro. What should be the ideal or the appropriate intro? क्या एक ideal और appropriate intro होना चाहिए? तो हम कह सकते हैं कि recently MP is becoming first state which adopt to AI based real time risk alert system for better monitoring its forest, bracket में not only the forest as well as the identifying the real cause of degradation of land, deforestation and ensuring the better management of forest through AI. देखो क्या हुआ, हमने देखा कि recently the MP is the first state who become first state which use the AI technology driven real time risk assessment or real time risk alert system in adopting. Why? To monitoring its forest, not only the forest as well as the identifying the real cause. Why? According to the 18th, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बता सकते हैं कि according to the 18th forest report, according to the 18th forest report, MP is the state where the highest amount of deforestation has been taken place. Despite of that, MP have the largest forest cover amongst all the state of इंडिया. तो देखो दो चीजें होंगी, यहाँ पर हमें पता चला कि डिफॉरेस्टेशन भी सबसे ज्यादा हाई रेट में हुआ है, उसके साथ साथ हमने देखा फॉरेस्ट कवर भी ज्यादा है. तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द मेन बॉडी ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन बॉडी ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द मेन बॉडी ऑफ दिस क्वेश्चन? मेन बॉडी में क्या लिख सकते हैं? तो मेन बॉडी में क्या कह रहा है भाई? लुक एट द क्वेश्चन. तो मेन बॉडी में कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट? तो फर्स्ट वन इज द, just I want to point out some technology or the AI based with the help of technology, it provides
real time real time assessment of the forest. रियल टाइम, इट प्रोवाइड्स द रियल टाइम असेसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट. तो पहला क्या है, रियल टाइम असेसमेंट प्रोवाइड करा रहा है कि व्हाट एरिया इज सेंसिटिव, विच एरिया इज डिग्रेडिंग विद द हेल्प ऑफ एआई. सेकंड वन इज it provides the forest carbon management. It provides the forest carbon management. फॉरेस्ट कार्बन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स इसरो का जो रिसोर्स सैट है, मॉनिटरिंग द फॉरेस्ट हेल्थ एंड डिफॉरेस्टेशन. तो विद द हेल्प ऑफ forest, with the help of resource sat by the ISRO, which monitor the deforestation as well as the forest health, with the hyper spectral imaging help to the assessing the carbon stocks and diversity भी देखना है, बायोडाइवर्सिटी एंड कार्बन स्टॉक भी, कि मतलब कितना वो पूरा एरिया कार्बन कंजम्पशन कर रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कितना ज्यादा है. सेकंड क्या हो सकता है, प्रिवेंटिंग द इंसिडेंट लाइक, थर्ड वन इज प्रिवेंटिंग द incident like forest fire and illegal deforestation. With the help of technology, preventing the incident like forest fire or the illegal deforestation, which monitor through the, you can say that the satellite images, through drones, and we also understand with the help of technology the animal behavior, what kind of changes animal have through the climate change, why the certain breeds are growing too much, why the certain breeds are you can say that the less number, and what kind of climate change faced by animals as well as the certain type of vegetation, कौन से certain type of vegetation किस तरह का climate change face कर रहे हैं. You have also suggest that. Second one is, we are with the help of technology, we are able to understand, we are set up some kind of sensor for the smoking and early warning system, set up the early warning system which before the disaster, which give us the message कि something is going on in the forest which are not appropriate. तो ये भी हमें पता चल सकता है, जैसे स्मोकिंग हो गया, कहीं पर गैस रिलीज हो रही है, कहीं पर कोई एक तरीके से स्मोक रिलीज हो रहा है, तो वी विद द हेल्प ऑफ technology we can understand. Second one is combating the encroachment, combating the encroachment. What does it means by combating encroachment? Because with that technology we are able to assess what kind of encroachment is there, where the man and you can say that the boundary where man or the forest has been separated, on those areas where because of deforestation, and we all are know that the because of demographic momentum is very high, and that is why the people is looking towards the forest and they just try to deforest, or you can say that the clean the land and convert into the agricultural field. So we are watching in a very peculiar manner, हम बहुत अच्छे से watch कर सकते हैं, we can assess कि where there is a encroachment. तो ये because without AI, with the help of technology ये possible नहीं था. ठीक, next क्या है, mitigating the human wildlife conflict. We also mitigating human wildlife
conflicts, mitigating human wildlife conflicts, the war, or you can say that the fight between human and वाइल्ड लाइफ, ये भी हम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सपोज दैट कि कोई एक एनिमल बाहर गया फॉरेस्ट या एक प्रोटेक्टेड एरिया के, तो वी जस्ट विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, विद द हेल्प ऑफ high resolution cameras, we watching them and we just aware, and with the help of SMS the nearby areas has been in the form of alertness के form में आ जाए, where we can reduce the ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स हम रिड्यूस कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, वी ऑल्सो प्रिपेयर द बेस्ट मैकेनिज्म फॉर द फॉरेस्ट restoration. Forest restoration, forest restoration, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन करना है. इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, ए फॉरेस्टेशन, वी मेक मोर ग्रीन बेल्ट्स, ए फॉरेस्टेशन, ए फॉरेस्टेशन. वी कैन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम ये भी कर सकते हैं. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड मॉनिटरिंग द बायोडाइवर्सिटी लेवल ऑफ monitoring the level of biodiversity we also monitor the behavioral change in the animals, जो भी behavioral change उनमें हो रहा है. We also understand कि where there is an incident like forest fire is more prone, where the mobility of mans are more. तो हम इधर देख सकते हैं कि which area is more sensitive and which area the illegal mining, the illegal mining, and we prevent the illegal mining and poaching of animals. We also with the help of technology we also control them. अब क्या कह रहे हैं, what is the need of sustainable forest management. ये तो इतना चीज हो गया. और हम क्या कर सकते हैं, environmental protection के लिए भी बहुत सारा कर सकते हैं, which I have to previously mention. बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए. ओके, नाउ वी आर जस्ट विद द वेरी शॉर्ट और क्रंची और क्रिस्पी वे में हम एक चीज देखेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. व्हाट इज द नीड ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. तो फर्स्ट नीड टू मेंटेन द biodiversity level, to maintain not only the biodiversity level as well as the genetic biodiversity and species biodiversity. और क्या कर सकते हैं, to for the better understanding of the animal and human behavior and what kind of changes facing by the forest and its animals and the neighboring areas, and how we can provide a better mechanism for its sustainability. ये सब हम कर सकते हैं. We also understand what is the industrial and trade necessity. Trade necessity को भी समझना है, because we just wanted to sustainable forest management. Sustainable forest management is implementing when we understand the industrial and you can say the trade necessity. जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसने क्या किया, उसने कहा है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इंडिया को लॉन्च करना पड़ेगा 2026 तक. द प्रोडक्ट्स विच इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन यूनियन, विच इज द यूनियन ऑफ सो मेनी कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, तो उस यूनियन में जो भी कार्बन इमिशन के प्रोडक्ट्स हैं उन पर हैवी चार्ज लगेगा, या तो वो सेल नहीं किए जा सकते. तो हमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना ही होगा. अब कह रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. क्या क्या इनिशिएटिव हमने लिया है, इसको भी थोड़ा सा यहीं पर बता देंगे. जैसे ग्रीन इंडिया मिशन, तो वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड दी ग्रीन इंडिया मिशन. ग्रीन इंडिया मिशन. The second one is Green India Mission. क्या कर रहे हैं, increase the forest cover of 0.56 between 2017 to 2021. इतना हमने increase कर दिया था. और क्या है, National Agro Forestry Policy. You have to mention that National Agro Forestry.
नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री 2014। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेंशन द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इंडियाज प्रोग्राम। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इंडियाज प्रोग्राम। इंडियाज प्रोग्राम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या कर सकते थे? compensatory a forest fund, make the compensatory a forest fund. Okay, how India can improve the sustainable forest? देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से हम देख ले रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये हमने कर लिया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया is vital for climate resilience and sustainability. We just discussed the role of modern technology in the sustainable forest management. We have done with the rule. यहाँ हमने ये भी देख लिया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है एंड व्हाट इज द रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर द फॉरेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यू हैव टू जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट विद द सर्कल कि भाई व्हाट काइंड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है भाई? बेटर प्रोवाइड द बेटर मॉनिटरिंग, provide the better monitoring, prevent the illegal poaching and mining। यहाँ ये भी बता सकते हैं। and whatever the point which put up in the previous slide you can understand कि भाई और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? better assessment in the current condition of forest, prevent the conflicts of man and wildlife, also understand the problem of addressing better way the problem of forest fire. All these problems has been, you can say that, addressed in a better manner. All these problems has been solved with the help of modern technology which has been previously mentioned. Now we are just add some more thing, like you have to mention with some flow charts कि how India can improve the sustainable forest management, जैसे strengthening the carbon markets, enhance the industry participation and with the corporate social responsibility act। क्या कह रहा है? support the rural communities because we all are know that the forest communities or the communities which are living in the close area of or the nearby the protected areas, you have to support them because their livelihood or their income on employment is associated with the forest. Improve the monitoring and compliances. And now we are just drawing the conclusion. conclusion क्या ड्रॉ कर सकते हैं भाई यहाँ पे? तो we just simply said that in the current era modern technology modern technology provide the great insight and a real time assessment of the situation of
forest and it also reveals the real cause. It reveals the real cause and real cause and real cause and exposing the responsible communities and ensuring better management. Ensuring the better management. So this is the whole approach. You can also access so many things, but you have to, it's depend upon कि भाई आपके पास कितना टाइम है. हमने ये बता दिया, आप कुछ दूसरा भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो. आप ये भी कह सकते हो कि modern technologies are providing the great insight on those particular topics or the situations where the man-made or the human watching cannot be possible to see that aspects. So the technology also prevent the illegal poaching. Technology also, with the help of technology, we can understand the environmental degradation in the different aspects. We can also understand what kind of, you can say that the forest illegal trading is going on. So with the help of technology, with the help of modern technology, we can understand. Modern technology, it means we use AI based system, we use drone system, we have to use high resolution cameras or the satellite images with every passing 2 and 3 days what happening and what's going on in the forest. Okay, look at the question. The Ratlam gas leak exposes gaps in India's chemical disaster management. In reference, evaluate the effectiveness of existing legal और institutional framework. क्या कह रहा है? रतलाम गैस रिसाव की घटना भारत में रासायनिक आपदा प्रबंधन की खामियों को उजागर करती है. इस संदर्भ में वर्तमान कानून और संस्थागत ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए. इवैल्यूएट कीजिए. तो whenever the word evaluate is seen in front of you, just you have to do, firstly you have to understand the nature of evaluation. Evaluation, it means you have to just calculate or analyze the pros and cons as well as the way forward. क्या आगे किया जा सकता है, इसका मतलब ये है. क्या कह रहा है क्वेश्चन? रतलाम गैस लीक exposes the gaps in India's chemical disaster management. Before we are understanding the gap, firstly we have to understand what is the disaster management of India's, what is the India's chemical disaster management and why it is exposes and why it is create the gap between chemical disasters as well as the safeguarding or the legal frameworks. Why the legal frameworks are here and the disasters are here, and there is a visible gap between both. And then क्या कह रहा है? Evaluate the effectiveness of existing legal, जो भी है अभी existing effectiveness of existing legal and institutional framework. You have to just put it the legal and institutional framework. Okay, now we are just going to interpret कि भाई क्या क्या बताना है. तो फर्स्टली हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि भाई firstly we are going to understand the demand of the question. What is the demand? Demand क्या है भाई इस क्वेश्चन की? Firstly we have to understand the demand of the question. Demand question का क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि there is a clear gap है between chemical disaster and
existing management policies. Management policies. There is a clear or visible gap. ठीक, there is a clear and visible gap. तो पहले यही बताना है. तो before we are going to address anything, we are just firstly understand what does it means by chemical disaster. What does it means by chemical disaster? क्या मतलब है chemical disaster का? तो कह रहा है chemical disaster is something which suddenly, it is a kind of, यहाँ पे लिख सकते हैं कि it is a kind of industrial, it is a type of industrial disaster, it is a kind of, or it is a type of industrial disaster where sudden release of intoxicating hazardous chemicals, where sudden release of intoxicating hazardous chemical occurs, which not only damage the death of people, also damaging environment and infrastructure. So this is the chemical disaster. Now we are just going to write down the intro. अब इसमें intro क्या कर सकते हैं? Intro ऐसे लिख सकते हैं, the recent event of Ratlam gas leaking, again reach the concern of our policy and क्या कह रहा है? The recent event of Ratlam gas leaking again raised the concern of our policy gap and a real situation where so many people hospitalized and there are so many deaths happening. To prevent these events और ब्रैकेट में लिख सकते हैं to avoid repetition
repeat of to avoid the cyclic pattern of these similar events. Tick. To prevent the events, we need a better strong we need a better strong legal and institutional framework ठीक। अब क्या कह रहा है भाई, हम ये तो देख लिए कि हमको एक नया चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन डिमांड्स कि भाई व्हाट काइंड ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, तो कौन कौन से एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स हैं। तो आई हैव टू प्री मेंशन दैट कि जैसे एक है हजार्डस वेस्ट रूल्स 1989, द भोपाल गैस लीक processing of claims act 1985, you have to mention that, the environmental protection act 1986 which happened after the Bhopal gas tragedy, national disaster management guidelines, you have to mention the insecticides act 1968, public liability act 1991, national environment appellate authority act 1997 and the factory act 1948। you have to explain some, जैसे environmental protection act, it is a umbrella, you can say that the umbrella legislation post भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बारे में बता सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ बता सकते हैं। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में जैसे हमने बता दिया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, द क्राइसिस अलर्ट सिस्टम एंड इमरजेंसी प्लानिंग है, ये हो सकता है। अब कह रहा है कि इसका यहाँ पे इवेल्युएट करना है, तो इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं, तो कह रहा है क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। क्रिटिकली इवेल्युएट का मतलब क्या है कि इसी क्वेश्चन में हमें स्ट्रेंथ भी इसकी देखनी है, इसी क्वेश्चन में हमको ये भी देखना है कि भाई इसमें कौन कौन से गैप्स हैं और क्या इस पॉलिसी के लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, कौन कौन सा है। तो जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज पब्लिश द डिटेल्ड केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2007, तो उसने एक 2007 में केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन प्रोवाइड की। उसमें उसका सबसे वीक पॉइंट क्या है कि सबसे पहले ये जो केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन 2007 है, तो सबसे पहले क्या है, वीक इम्प्लीमेंटेशन एंड enforcement, weak enforcement, lack of monitoring, तो वीक इम्प्लीमेंटेशन है, लैक ऑफ मॉनिटरिंग है, और क्या है, लैक ऑफ रियल टाइम इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, लैक ऑफ रियल टाइम इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम। तो ये है। नेक्स्ट और क्या कह सकते हैं हम लोग, हमें इसमें बता सकते हैं आउटडेटेड डेटा एंड रिस्क मैनेजमेंट, आउटडेटेड डेटा एंड रिस्क मैनेजमेंट, आउटडेटेड
outdated data and risk management. रिस्क मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्या हो सकता है? इनएडिक्वेट कम्युनिटी अवेयरनेस. इनएडिक्वेट, द नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट inadequate community awareness. अब इसमें क्या बता सकते हैं? अंडर दिस वी हैव टू say that there is a no mock drill, there is a no early warning system, and there is an, you can say that the area have not trained and aware what kind of industrial intoxic material can release in a sudden way and what they can do for preventing them. ये कुछ हमारे पास नहीं है. क्या कह रहा है? neglect the informal sectors. What does it means by neglect the informal sector? Neglect the informal sector which also release sudden chemical, you can say that the chemical hazardous gases, chemical and hazardous gases like many small and medium chemical units also release, but no one can responsible and no one take the authority to regulate them. Low accountability and legal delays. Low accountability and legal delays. तो लो अकाउंटेबिलिटी कैसे हम देख सकते हैं? जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में the main culprits has been move away from India because of the low accountability and legal delays. Okay, way forward में what we can, हम क्या कर सकते हैं इसको सुधारने के लिए? तो what can be the suggestive measure? कौन कौन से suggestive measure बता सकते हैं हम? तो इसमें बता सकते हैं कि firstly with the help of AI, with the help of AI, artificial intelligence, better zoning and mapping of the sensitive area. The second one is what we can do: mass level community awareness program, making the register, making the digital register for better planning and identifying them, और क्या कर सकते हैं? regulate the small and medium industries. और क्या कर सकते हैं भाई? जोनिंग कर दी, रेगुलेट कर दिया, और हम कर सकते हैं मैंडेटरी पॉलिसी डिस्क्लोजर. तो एक काम हम यहाँ और भी कर सकते हैं, मैंडेटरी पॉलिसी डिस्क्लोजर फ्रॉम द
कंपनीज, उनकी पॉलिसीज क्या है, व्हाट दे कैन डू फॉर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवाइज द लैंड यूज एंड जूनिंग लॉ, कि कहाँ हो सकता है, रिवाइज द लैंड यूज एंड जूनिंग लॉ. What does it means by revising the land use? Like मान लो कहीं पर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से इंडस्ट्री को कहाँ बाहर किया जा सकता है. और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ऑल्सो strict enforcement of environment impact assessment as well as the environment protection act. So these are the some preventive measures which can be taken, or which can be the suggestive measure which you can inculcate in your answers. Okay, now just look at the question. India's waste management system is inadequate to keep pace with the expansion of urbanization. Critically analyze this statement, focusing on the lack of infrastructure and the policy measure. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, also suggest the legal, also suggest सस्टेनेबल सॉल्यूशन. भारत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली शहरीकरण के विस्तार के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ है. बुनियादी ढांचे और नीतिगत उपायों की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए. लुक एट द क्वेश्चन एंड व्हाट काइंड ऑफ नेचर ऑफ द क्वेश्चन. इंडियाज वेस्ट मैनेजमेंट system is inadequate to keep pace with the expansion of urbanization. Critically analyze, just find out the tail word, understand. Critically analyze this statement, focusing on the lack of infrastructure and policy measures. Focusing बता रहा है कि what is the secondary demand of the question, secondary keyword. Focusing on the lack of infrastructure and policy measure also suggests the sustainable solution. It means you have to suggest the sustainable solution. This is the tertiary keyword of the question. Primary is India's waste management system is inadequate to keep pace with the expansion of urbanization. Okay, now how we can approach this question. हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. what is the need of the question, what is the demand of the question, and what is the behavior of the question. Question का behavior क्या है, how we can approach. Firstly you have to understand the behavior or the demand of the question. Demand of the question क्या है कि there is a clear gap, there is a inadequate you can say that the waste management, and it cannot be make the pace and the appropriate state with the expansion, hugely expansion of the urbanization. तो हम कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं. तो बिफोर वी आर अप्रोचिंग द क्वेश्चन, फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड सम कीवर्ड्स लाइक वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट management. Why the government is too much focusing on waste management? Why government is focusing too much on waste management? Because waste management is the kind of plan which treat the waste like plastic waste, like air pollution wale waste, and the waste which is emerge, or waste which can create, and waste can which produce by the डे टू डे लाइफ, जो भी वेस्ट क्रिएट हो रहा है. तो कह रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या करना है भाई. व्हाट डज इट मीन्स बाई वेस्ट मैनेजमेंट. तो वेस्ट मैनेजमेंट इज अ टेक्निक वेयर वी कैन नॉट ओनली recycle the waste, where it is not only dumping of the waste in a certain areas, we can recycle the waste, we can also convert into the resource, waste to wealth. So waste management is something which is the process where we can recycle the waste, where we can create from waste to wealth. तो it is a kind of management. ठीक. अब कह रहे हैं कि we have to understand the nature of the question. Just
I want to again read the question. India's waste management system is inadequate to keep with pace with the expansion of urbanization. Critically analyze. तो क्या कह रहा है भाई इस क्वेश्चन में कि इंडिया का जो वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है वो अच्छा नहीं है और वो अर्बनाइजेशन के साथ पेस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं, दी एनुअल, हाउ वी कैन स्टार्ट, दी annually 62 million ton waste produced by India according to Environment Ministry, which accept that scientifically 42 million, only 42 million ton waste can be reached at the place of waste dumping, and only 9% according to the nature you can say that the magazine, only 9% can be recycled and convert into waste to wealth. This is the kind of introduction आप बता सकते हो. अब क्या कह रहा है, चैलेंज टू अचीव द सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. पहले तो ये देखना है कि why India is facing and why India is unable to make the peace or the balance between expansion of urbanization and inadequate you can say that the balance between waste management and urbanization. तो अर्बनाइजेशन क्या करता है, पहले तो समझो कि टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया. अर्बनाइजेशन क्या कर रहा है भाई, इट क्रिएट्स सडन एंड रैपिड waste. It creates all kind of वेस्ट, लाइक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी है, एयर पोल्यूशन का वेस्ट भी है, डे टू डे लाइफ का जो वेस्ट मैनेजमेंट है भाई, कूड़ा आदमी फेंक रहा है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है बिकॉज अर्बनाइजेशन में लैकिंग ऑफ मॉनिटरिंग है, लैकिंग ऑफ द डोर टू डोर वेस्ट मैनेजमेंट है. और क्या कह रहे हैं, वी अवॉइड द अर्बन मॉर्फोलॉजी, वी अवॉइड द अर्बन मॉर्फोलॉजी. अर्बन मॉर्फोलॉजी को भी हमने नहीं देखा कि भाई अर्बन मॉर्फोलॉजी वहाँ अर्बनाइजेशन के लिए ठीक है कि नहीं, किस तरह का वहाँ पे लैंड फिलिंग साइट होना चाहिए, किस तरह का अपार्टमेंट्स का डेवलपमेंट होना चाहिए, ड्रेनेज किस तरह का होना चाहिए. जहाँ पर कि यहाँ पर हमने देखा कि एंथ्रोपोजेनिक वेस्ट क्रिएट ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू द इलीगल और अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, इस वजह से. अब देखो भाई सबसे पहले क्या है, क्या कह सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस इंडिया फेस. तो सबसे पहले है इंडिया किस तरह का चैलेंज फेस कर रहा है. तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस कर रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल constraints.
इंडिया क्या कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेस कर रहा है, जैसे इंडिया faces outdated and insufficient infrastructural for the waste collection. क्या कह रहा है, India is facing the outdated and uncapable infrastructure for waste storage, segregation and processing. तो क्या कह रहा है यहाँ पे, आप बता सकते हैं कि इंडिया is facing storage problem क्या हो गया भाई यहाँ पे, प्रॉब्लम एंड स्टोरेज प्रॉब्लम, segregation प्रॉब्लम, और क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग स्पेशली इन अर्बन एरियाज, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम इन अर्बन areas. India is facing this. Okay, now next one is rural areas often lack access to the basic waste management infrastructure. Second one is financial constraints, because the municipal corporation prevents the investment in the modern waste technology. तो क्या हो रहा है, the municipal corporation prevents the modern tools for waste collection. ठीक, अब ये क्या है, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इशू. पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन. द सेकेंड वन इज पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन. द सेकेंड वन इज पब्लिक अवेयरनेस and participation. Public awareness and lack of participation, because we all are know that if the people of India is aware in the subject of waste management, and they are aware how the waste management is impacting their health, severely impacting their health as well as their immunity system. तो इसका मतलब है अगर पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस बढ़ा दिया जाए तो इट विल ऑल्सो हैंडल द people is more awareing. If the people is more awareing, it means the solid waste management and the segregation is easier to incorporate. Next क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन एंड डाइवर्स वेस्ट सिस्टम. टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस, टेक्नोलॉजी limitation and diverse waste management. Lack of diverse waste management. Lack of diverse waste management, what does it means by? तो हमने देखा कि भाई reliance on the outdated waste technology, the India's is reliance on the outdated waste technologies, processing technologies, segregation technologies, and the technologies which India use for the recycling is inadequate for converting waste into wealth. Next one is challenges from the informal waste sector. Challenges from informal waste sector. The second one is the challenges from informal waste sector. The sectors which are not registered but they are continuous releasing the
and you can say that the hazardous waste materials, there is a no regulation on this. Challenge for the informal sectors and land scarcity, also कह सकते हैं, and land scarcity, लैंड स्कार्सिटी. अब इसमें आप बता सकते हो कि भाई क्या है, तो इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर्स क्रूशियल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, फेसिंग द सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एंड लैक ऑफ फॉर्मल रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट. अब क्या कह रहे हैं भाई, इसमें क्रिटिकली इवेलुएट करना था, तो हमें कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी बतानी है. ऐसा नहीं है कि सारा क्रिटिकली एनालाइज करने में. अब क्या करना है, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट रिसोर्स थ्रू द सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस. अब एडवांटेज बता रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट एज अ रिसोर्स थ्रू द सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस. तो सेकेंड वन इज, यहां पे बता सकते हैं कि यूटिलाइजेशन of waste to resource by circular economic practices. तो क्या कर सकते हैं भाई, सर्कुलर इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. एम्फेसाइजिंग वेस्ट एज अ रिसोर्स बाय प्रमोटिंग रिसाइकलिंग एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इंप्रूविंग सेग्रीगेशन एट द सोर्स एंड प्रमोटिंग द वेस्ट टू वेल्थ. ऐसा कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेड द एक्सटेंडेड, you can say that the producer responsibility, ensure the manufacturers are taking responsibility for the waste management. और क्या कर सकते हैं, strengthening the regulatory framework for waste policy. The second one is strengthening the waste management framework, strengthening and regulating both. और क्या कर सकते हैं, sustainable financing and public private partnership. Third one is sustainable and PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं. सस्टेनेबल अवेयरनेस और उसके साथ साथ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर आ सकते हैं. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इन वेस्ट टू एनर्जी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वेस्ट टू एनर्जी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी हमको करना पड़ेगा. कम्युनिटी एजुकेशन, यहां पर एक नया पॉइंट आप डाल सकते हैं, कम्युनिटी एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी हमें करना पड़ेगा. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एडुकेशन, ये बता ही दिया. कम्युनिटी एंगेजमेंट, इंक्रीज द कम्युनिटी एंगेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू सजेस्ट द इम्प्रूव वेस्ट सिस्टम इन इंडिया. तो सजेस्टिव मेजर भी देना है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द सजेस्टिव मेजर्स.
सजेस्टिव मेजर में क्या हो सकता है? यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर बेटर monitoring, better monitoring of waste management. ठीक, सेकेंड वन क्या हो सकता है? आइडेंटिफाई दोज एरियाज with the help of technology, identifying those areas, identifying those areas which are unregulated and untouched for the waste management. और क्या कर सकते हैं? The second one is zoning of urban areas. Second, making products from waste, मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट. और क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर डंपिंग, processing and recycling. तो ये भी हम कर सकते हैं. और भी बहुत सारे हैं. enhancing the regulatory frameworks and public sector as well as the promoting the sustainable financing and decentralization of finance. ये भी कर सकते हैं. promoting the financial sustainability and decentralization of schemes like Swachh Bharat Mission, and also implement the नीति आयोग एजेंडा. जैसे नीति आयोग ने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज जो है क्लीननेस प्रोग्राम भी चलाया है. तो ये सब आप ये कह सकते हैं. और फिर उसके साथ साथ क्या कह सकते हैं? इसके कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? इंडिया इज अ, व्हाट वी कैन ड्रॉ एज अ कंक्लूजन में we can write down India is a growing, fast growing economy and is a fast growing economy. क्या हो रहा है ये पेन का? and is a fast growing economy and rapid urbanization. Should not be at the cost of environmental degradation. So India need
India, so India need to tackle the waste management issue. India tackle the waste management issues with the help of comprehensive approach, which includes all the इंडिकेटर्स लाइक फाइनेंशियल कॉपरेशन भी होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट अवेयरनेस भी होना चाहिए, हमें स्टोरेज सेग्रीगेशन रिसाइकलिंग प्रोसेसिंग ये भी आना चाहिए, और वेस्ट टू वेल्थ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. तो आप ये सारी बातें कर सकते हैं. ठीक, क्वेश्चन वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आर सीरीज ऑफ क्वेश्चन solving series. Climate change poses the complex developmental and geopolitical challenge for India. Analyze its impact. क्या कह रहे हैं? Analyze its impact on key sector and evaluate the India's policy response. जलवायु परिवर्तन भारत के लिए जटिल विकासात्मक और भू राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत करता है. मुख्य क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए तथा भारत की नीति प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कीजिए. क्या कह रहे हैं? क्लाइमेट चेंज पॉजेस द कॉम्प्लेक्स developmental and geopolitical challenge for India. Analyze its impact on key sector and evaluate the India's policy response. Just look at the question. You have to understand कि कुछ बेसिक बातें आपको इस क्वेश्चन की पता होनी चाहिए. क्या कह रहा है? पहले तो क्लाइमेट चेंज क्या है, व्हाट डज इट मीन्स बाय क्लाइमेट चेंज एंड हाउ इट पॉजेज कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया एज अ कंट्री. फिर क्या कह रहा है? एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन की सेक्टर्स. कौन कौन से की सेक्टर में इनका इम्पैक्ट हो रहा है? इवेलुएट द इंडियाज पॉलिसी. तो बिफोर वी आर गोइंग टू solve the question, we are just going to draw the approach or just going to make a road map. पहले क्या बताना है भाई कि climate change, what does it means भाई? climate change क्या मतलब होता है climate change का? climate change and how climate change impacts the politics of the India. How the climate change is controlling the geopolitics of the India. And next क्या कह रहा है भाई कि developmental schemes, developmental progress, how it controls the developmental projects. डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को कैसे कंट्रोल कर रहा है. नेक्स्ट क्या देखना है भाई इसमें क्वेश्चन में, एक बार ऊपर देखो. एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन की सेक्टर, इवेलुएट द इंडियाज पॉलिसी. तो वी आर जस्ट एनालाइजिंग द impact of climate change on key sector of India. ठीक, and also evaluate the impact of climate change and India's policy framework. Now how we can approach this question? कैसे approach कर सकते हैं? What you can say that the ideal, what should be the ideal approach? Ideal जैसा तो कुछ नहीं होता, फिर भी क्या बोल सकते हैं कि climate change is no longer climate change is no longer environmental issue. क्या बता रहे हैं कि भाई climate change is no longer environmental issue but also
but also it have broader impact on the whole dynamics of the country. क्या बता सकते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर जस्ट अ इन्वायरमेंटल इशू बट मल्टी डायमेंशनल चैलेंज. ये भी कह सकते हैं कि बट मल्टी डायमेंशनल challenge impacting the India's trajectory, development trajectory, on because India is a fast growing economy. India is a fast growing economy, as well as India is a agrarian economy, where the more than 50% population of India is depending on the agrarian economy. Okay, now to address this, अब क्या कर सकते हैं कि भाई अब इस इंट्रो के बाद कह सकते हैं डेवलपमेंटल चैलेंज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. सबसे पहले कौन कौन से चैलेंज हम फेस कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल चैलेंज. कौन कौन से चैलेंज वी आर जस्ट फेसिंग? तो पहला क्या है कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंटल चैलेंज इंडिया इज फेसिंग. अब जाके हम लोग ये बता रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंटल चैलेंज इंडिया इज फेसिंग. तो पहला चैलेंज क्या है कि पर कैपिटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी has go down because of the climate change. तो हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रहा है बिकॉज ऑफ द इरेगुलर और द इरेटिक नेचर ऑफ इरेगुलर की जगह इरेटिक बोलते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा. इरेटिक नेचर ऑफ monsoon, because India is too much depending on the monsoon. This, and then El Nino, impact of El Nino, La Nina, El Nino and La Nina, and also Indian Ocean dipole, positive and negative. Erratic nature of La Nina, El Nino, plus erratic nature of monsoon, El Nino, La Nina, Indian Ocean dipole. Also you can say that the rising of sea surface temperature, as well as the temperature of the continent. और क्या बता सकते हैं? वाटर स्कार्सिटी. सेकेंड वन इज वाटर स्कार्सिटी. We all are know that because of climate change there are so many areas which is before the climate change there is a no scarcity of water, but because of the climate change and because of the erratic nature of monsoon, because of there are so many variables has been changed, the water scarcity we are facing, because over 600 million Indians face the high extreme water stress. Why? Because of the climate change. The glaciers are shrinking. Shrinks. क्या हो रहा है भाई? ग्लेशियर जो है श्रिंक कर रहे हैं. श्रिंक कर रहे हैं. ग्लेशियर्स आर श्रिंकिंग. थर्ड क्या हो सकता है? हेल्थ रिस्क बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. हेल्थ रिस्क
हेल्थ रिस्क क्या है भाई, जैसे लाइक द फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव इंक्रीजेस, हीट वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स इंक्रीज, ठीक, इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक डेंगू मलेरिया, मतलब वाटर बॉर्न डिजीज आर इंक्रीजिंग, ठीक। और क्या कह रहे हैं, द क्वालिटी और द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन ऑल्सो गोज डाउन, बिकॉज ऑफ हीट वेव द प्रोडक्टिविटी of people also decline, ठीक। हमने देखा इस बार कि हीट वेव की वजह से बहुत बार हमें, मतलब गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो है बिटवीन 10 to 4 जो टेन्योर है 10 AM to 4 PM के इस बीच में निकलने को मना कर दिया, और बताया कि अगर मान लो एक सर्टेन पर्पज बताया कि भाई ये चीज़ें अगर मान लो किसी को फीवर है, कोई वीक है, ओल्ड एज का है, बच्चे ना निकलें, और भी बहुत सारा चीज़ बताया, ठीक, जिसमें बताया गया कि भाई आपको अवॉइड करना है ट्रेवल करने से। और क्या है, अर्बन वल्नरेबिलिटी, अर्बन वल्नरेबिलिटी, व्हाट डज इट मीन्स बाई अर्बन वल्नरेबिलिटी, क्या मतलब होता है इसका। तो हम देखते हैं कि सी लेवल राइज एंड द बिकॉज ऑफ सी लेवल राइज द अर्बन फ्लडिंग और यू कैन से दैट द urban flooding threaten like the cities like Mumbai, Chennai and Kolkata. Urban heat island, the islands, urban heat island, ये भी बता सकते हैं आप, urban heat island, urban heat islands. Most of the cities change into the urban heat island, which you can say that which ultimately impact the developmental scheme and progress. Next क्या कर सकते हैं, energy security, energy security, एनर्जी सिक्योरिटी, व्हाट डज इट मीन्स बाई एनर्जी सिक्योरिटी, भाई इसका मतलब क्या है। तो हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, because of climate change there are high consumption of energy, especially in the urban areas. These are the developmental challenges. There are so many, but we have also understand the word limit, and now we are just going to geopolitical challenges or geopolitical implication. The first one is climate induced migration. It will create the tension amongst the countries which are facing input of climate induced migration, like displacement due to the coastal erosion, water stress in South Asia could destabilize the borders and create the refugee pressure, especially from Bangladesh. इंडिया में क्या हुआ है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन है। और क्या कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक वाटर कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड क्या बता सकते हैं, स्ट्रेटेजिक वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या कह सकते हैं इसमें भाई, स्ट्रेटेजिक वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, द glaciers are only source of water, drinking water, but because of the glaciers are shrinking, the water availability is in the risk zone. तो इसी वजह से हम कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक वाटर कॉन्फ्लिक्ट, लाइक अभी हमने देखा इंडस वाटर ट्रीटी, बार बार होता है कि इंडस वाटर ट्रीटी इज नॉट जस्टिसेबल
इन बोथ द कंट्रीज. पाकिस्तान क्लेमिंग दैट कि हमको वाटर कम मिल रहा है, इंडिया कहता है हमने वाटर ज़्यादा दिया. एंड रिसेंटली द चाइना इज बिल्डिंग डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर विच अपोज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, कि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर पर आप डैम नहीं बना सकते, इसको फ्री किया जाना चाहिए क्योंकि वाटर सिक्योरिटी नहीं है, स्ट्रेटजिक वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. अच्छा, इट ऑल्सो क्रिएट्स टेंशन अमंग्स द कंट्री लाइक इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल एज वेल. ठीक. ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन, ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन, थर्ड क्या हो सकता है? ग्लोबल, थर्ड वन इज ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन. ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन, क्या मतलब है ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन का? इसका मतलब ये है कि इंडिया फेसेस प्रेशर टू रीच इट्स क्लाइमेट एम्बिशंस व्हाइल डिफेंडिंग इट्स डेवलपमेंटल राइट. मतलब हम ये भी देख रहे हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशन के साथ कि भाई इंडिया जो है वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं कर सकता है कि क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, टू प्रिवेंट द क्लाइमेट चेंज, इट टोटली चेंज इट्स एनर्जी sources and it totally change its you can say the resource, अपना रिसोर्स चेंज नहीं कर सकता. ग्रीन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वॉर्स, ये भी एक हो सकता है. ग्रीन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वॉर, टेक्नोलॉजी वॉर. क्या मतलब है ग्रीन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी वॉर का? इसका मतलब ये है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो बाय द ईयू, क्या बता रहा था? रिस्ट्रिक्शन ऑफ हाई कार्बन गुड्स कुड अफेक्ट द इंडियाज एक्सपोर्ट. अभी हमने बताया था कि जो हाई कार्बन कंटेनिंग गुड्स हैं उसके एक्सपोर्ट पर, सॉरी इंपोर्ट पर ईयू जो है वो क्या कर रहा है? बैन कर देगा 2026 से. ठीक. अब हम कह सकते हैं इवेल्युएशन द इंडियाज क्लाइमेटिक पॉलिसीज, ये हो गया. इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? अब पॉलिसी को इवेलुएट करेंगे. तो पहला क्या है भाई? सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट को देख लेते हैं. यहां पे पेरिस एग्रीमेंट 2015, और उसी के साथ हमें क्या देखना है? नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट 2070. ठीक. ये है जिसमें हमने क्या कहा है भाई? तो इसी के लिए हम, इसी में हमने एक टारगेट बनाया है कि पेरिस एग्रीमेंट और नेट जीरो कार्बन टारगेट है बाई 2070 वी हैव टू अचीव. इसी के लिए हमने अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एक बनाया है 2022. तो आप इसे भी कर सकते हो, नेशनल डिटर्मिनेशन, नेशनल डिटर्मिनेशन कमिटमेंट प्रोग्राम. हमने एक तरीके के स्कीम बनाए हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हम रिड्यूस करेंगे अपना जो कार्बन इमिशन है बाई 45% बाई 2030 तक 40% अपना 45% कार्बन इमिशन रिड्यूस कर देंगे. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? एनर्जी ट्रांजिशन. तो इंडिया इज अ लीडिंग कंट्री, इंडिया इज अ फिफ्थ leading country, leading country, country which change its energy sources. अपने एनर्जी सोर्सेज को हम चेंज कर रहे हैं. वी आर मोर टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, वी आर मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, वी आर फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक. जैसे जिसमें हम लोग वी आर प्रोमोटिंग ग्रीन हाइड्रोजन, ई व्हीकल्स, सोलर पार्क्स, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इस पर हम फोकस कर रहे हैं. डिस्पाइट ऑफ दैट currently we are more depending on the non-renewable sources for the energy. Climate finance and carbon marketing, climate finance and carbon marketing, climate finance and carbon marketing. कार्बन मार्केटिंग,
इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, इसमें हम लोग कर रहे हैं ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट्स आर लॉन्चिंग periodically green bonds and also carbon credit trading scheme 2023, which provides the incentives emission for carbon reduction। और क्या करें, disaster resilience and adaptation, disaster resilience and adaptation, ये कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसमें हमने किया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर साइक्लोन, हीट एक्शन प्लान, जूनिंग, ये सब हम लोग कर रहे हैं। फिर क्या रहे हैं, इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं भाई, अब इसके बाद हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि कंक्लूजन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स, डिस्पाइट ऑफ all the efforts, despite of all the efforts, the reduction level is not satisfactory, but gradually India needs to understand and address this issue as their प्रायोरिटाइज कंसर्न के रूप में इशू करेगा। और क्या कह सकते हैं इसमें, ये भी कह सकते हैं कि वेयर बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्लाइमेट जस्टिस, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी इज बोथ चैलेंजिंग एंड एन अपॉर्चुनिटी, सो इंडिया मेक श्योर देयर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ऐसा भी कुछ आप कर सकते थे इस क्वेश्चन में। ओके, नाउ ये एक आइडियल है, इसके साथ साथ आप बहुत सारे अदर वैरायटी के भी आंसर्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मॉडल आंसर में, और भी आप अपने तरीके से भी इसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन, इंडियाज इरिगेशन सिस्टम लैक इफिशियंसी एंड इक्विटी, इंडियाज इरिगेशन सिस्टम लैक इफिशियंसी एंड इक्विटी, क्रिटिकली एग्जामिन द challenges and suggest the measure to improve water use efficiency। water use efficiency क्या कह रहे हैं, कह रहा भारत की सिंचाई प्रणाली में दक्षता और समानता की कमी है, इससे जुड़ी चुनौतियों की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए एवं जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के उपाय सुझाइए। इंडियाज इरिगेशन सिस्टम लैक इफिशियंसी एंड इक्विटी, क्या कर रहा है भाई, लैक ऑफ efficiency and equity, this is the primary keyword of the question, efficiency and equity, critically examine, this is the tail word। what does it means by critically examine, critically examine का मतलब क्या होता है, तो हम देखते हैं critically examine का मतलब होता है you have to understand the need of the critically examine का मतलब you have to just address both strength and weaknesses, challenges and suggest the measures to improve the water efficiency, मतलब उसके साथ साथ आप बताओ कि इससे जुड़ी चुनौतियां कौन सी हैं और जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के उपाय सुझाओ। तो कह रहे हैं हाउ वी कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द आइडियल अप्रोच, क्या आइडियल अप्रोच होना चाहिए फॉर एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन। तो आइडियल अप्रोच क्या होना चाहिए कि इंडिया is a agrarian economy where irrigation system is a
backbone of its agricultural surplus economy, but currently India's irrigation system is facing certain stress, like maximum utilization of water through artificial means of irrigation. So now क्या बता दें, India is an agrarian economy where the irrigation system is a backbone of its agricultural surplus economy, but currently India's irrigation system is facing certain stress like maximum utilization of water through the artificial means of irrigation. Now in the second part of this question we have to just input the current status of irrigation in India. तो current status क्या है? तो current status I am just showing in a flow chart. सबसे बड़ा क्या है? ट्यूबवेल इरिगेशन है, ट्यूबवेल इरिगेशन. The second one is canal irrigation. Third one is pond irrigation. ठीक, तो ट्यूबवेल इरिगेशन हो गया. एंड अदर मीन्स यहाँ कर सकते हैं, अदर मीन्स ऑफ इरिगेशन, जिसमें स्प्रिंकल हो जाएगा, जिसमें आप जो है और भी पॉन्ड इरिगेशन के अलावा ट्यूबवेल एंड अदर जैसे टैंक हो गया, वेल हो गया, तो अदर मीन्स में कर सकते हैं. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू द मेन बॉडी क्या है? चैलेंजेस टू efficiency and equity. What are the challenges? तो efficiency related challenges क्या हैं? Just we are addressing this. Challenges of efficiency related क्या challenges हैं? तो there are huge water loss through canal irrigation. Not only the water loss, as well as it hamper the health of soil as well. Hamper करता है क्या? Health of soil as well. जैसे water loss through the canal system. The second one is क्या हो सकता है? overuse due to free overuse of. The second one is overuse of canal water due to free. क्या है? ओवर यूज करते हैं कैनाल वाटर का बिकॉज द फ्लैट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना. ओवर यूज ऑफ कैनाल वाटर ड्यू टू द फ्री. सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर वेरी लेस एंड दैट इज वाई द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. सेकेंड वन क्या है? फ्लड इरिगेशन डोमिनेंस. फ्लड इरिगेशन
डोमिनेंस। फ्लड इरिगेशन डोमिनेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? तो ओवर 80% ऑफ द फार्मर्स यूज इन इफिशिएंट एंड इरिगेशन मेथड। ओवर, यहाँ पे लिख सकते हो कि ओवर दी over 80% of the farmers uses ineffective means of irrigation। मीन्स ऑफ इरिगेशन। और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसके अलावा आप देख सकते क्रॉप वाटर मिसमैच। क्रॉप वाटर मिसमैच, क्रॉप water mismatch. What does it means by crop water mismatch? Because of the irrigation and because of the unscientific implementation of irrigational facility, there is a crop water mismatch. Because if the crop is wanting more water, then there is a less providing of the water, less sharing of water. If the crop is demanding less water, then the crop is sharing, crop through the canal or through the irrigation system sharing the surplus water। ये हो रहा है। लो एडॉप्टेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन, लो एडॉप्टेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन। लो एडॉप्टेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन जैसे स्प्रिंकल इरिगेशन है, ठीक। तो ये सारे इरिगेशन को, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंकल, ठीक, स्प्रे इरिगेशन, ठीक। और उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि स्प्रिंकल इरिगेशन है, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? स्प्रिंकल इरिगेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ये इफेक्टिव है, वाटर इफेक्टिव मैनेजमेंट है, ठीक। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं? जैसे ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप एंड स्प्रिंकल, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? फ्लड हो गया। इक्विटी रिलेटेड चैलेंजेस क्या है? इक्विटी में रीजनल डिस्पैरिटी। पहला तो इक्विटी के साथ क्या है? रीजनल डिस्पैरिटी। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन इट क्रिएट्स रीजनल disparity, like Haryana and Punjab have better facilities and there is a different class of farmers. So northwestern region Punjab and Haryana gets more water compared to the rain fed areas or the rain fed region of India like Bundelkhand, like the eastern part of Aravalli. Next क्या कर सकते हैं? Class disparity. Second one is class disparity. Because of the green revolution is successfully implemented in the northwestern region like Punjab, Haryana and the western UP, it creates the class classification amongst the farmers. और क्या है? इंट्रा कमांड एरिया डिस्पैरिटी, इंट्रा कमांड एरिया डिस्पैरिटी। अब इसका मतलब क्या है भाई? तो कह रहा है, हम लोग जानते हैं कि अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम देयर इज अ एरिया कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम which is only aiming to the providing the irrigation facility for certain areas। तो हमने क्या देखा कि इंट्रा कमांड एरिया इनइक्विटी है। जैसे हम देखते हैं, क्या देख रहे हैं भाई? हेड रिच फार्मर्स गेट मोर वाटर देन द टेल एंड एंड फार्मर्स इन द कैनाल सिस्टम। हेड रिच फार्मर का मतलब क्या है? जो बिल्कुल सामने है, दे आर रिसीविंग मोर वाटर through the canal, and the last or the you can say that the tail end farmers are receiving less water। अब क्या है? जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी। जेंडर डिस्पैरिटी क्या है भाई? जेंडर डिस्पैरिटी हम देखते हैं, विमेन ऑफन मेन एग्रीकल्चरल लेबर
आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द वाटर यूजर एसोसिएशन। वाटर यूजर एसोसिएशन से और जो women participation है, because in the traditional if you look at the traditional time or if you look at the ancient culture where the women are key stone for the agricultural activities। अब इसमें वाटर यूज इफिशियंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू identifying the area where there is a overflow of water by canal irrigation। आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर किस सीजन में, सीजन भी ऑल्सो है ना, सीजन इज ऑल्सो कंसिडरिंग। तो हमें देखना है पहले आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर द ओवरफ्लो ऑफ वाटर बाय द कैनाल इरिगेशन। प्रमोटिंग, सेकंड क्या कर सकते हैं, प्रमोटिंग माइक्रो irrigation methods which are more effective and साइंटिफिक, लाइक स्प्रिंकल इरिगेशन है और इसके साथ साथ हमने ड्रिप इरिगेशन किया। और क्या कर सकते हैं इसके साथ, इसके अलावा हम अपार्ट फ्रॉम दिस क्या कर सकते हैं, लेजर लैंड लेवलिंग, रिड्यूस द लेजर लैंड लेवलिंग, लेजर लैंड लेवलिंग भी कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम, फोकसिंग ऑन farmer awareness, how much and how many times we can provide water for the certain crops। और क्या कर सकते हैं, working on the education for better crop combination, better crop combination के लिए, which require less water, और उनके वाटर इफिशियंसी को भी देखना है। और क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी। अब इसके बाद हमें क्या बताना है, हाउ वी कैन यूज द वाटर यूज इफिशियंसी। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रमोट द माइक्रो इरिगेशन जो हम बता चुके हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज द इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज, पॉलिसी में क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज electricity, rationalize the electricity subsidy। रेशनलाइज करना है एक जो है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को, ये क्यों करना है, प्रमोट मीटरिंग एंड अवॉइड द ग्राउंड वाटर ओवर यूज। ठीक, और क्या करना है, वाटर प्राइसिंग भी करना है, वाटर प्राइसिंग। व्हाई, व्हेन द पीपल्स आर पेइंग प्राइस फॉर वाटर, मतलब बिहेवियरली उनके साथ क्या होगा कि दे आर मोर अवेयर एंड अटेंटिव फॉर द यूज ऑफ वाटर, इफेक्टिव यूज ऑफ वाटर। और क्या कर सकते हैं, इंटेंसिव
इंटेंसिव और क्रॉप कॉम्बिनेशन, वर्क ऑन क्रॉप कॉम्बिनेशन, जो ऊपर हमने एक बार बता दिया है। और इंस्टीट्यूशनल क्या कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, जैसे स्ट्रेंथनिंग द वाटर यूज एसोसिएशन, अवेयरनेस कैंपेन, ठीक। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग एक किसका कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। कंक्लूजन क्या है, इंडियाज फ्यूचर लाइज on its irrigation because ultimately it affects the productivity of agriculture and food and food security, soil हेल्थ, ठीक, ये बता सकते हैं। इसके अलावा क्या बता सकते हैं कि इंडियाज इरिगेशन फ्यूचर डिपेंड नॉट जस्ट ऑन एक्सपेंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बट इंश्योरिंग द efficient and equitable use of irrigation, and it is possible when we are using the mix of technology, policy reform and behavioral change, and then it will हैपन। तो इतना कुछ आप कर सकते हैं इसमें, ठीक। ये मैंने एक बता दिया, कुछ आपको मॉडल आंसर में प्रोवाइड कर देंगे डिफरेंट वे। थैंक यू सो मच।